our duty is to become a saint also. हम सभी लोगों को संत बनना ही है. संत बनना ही अपने जिंदगी का मकसद है. संत यानी योगेश्वर, संत यानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट. हम सभी लोगों को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है. Meditation is the key, my dear friends. What is meditation? The science of meditation says 5 things. Becoming one with the breath, then making your mind empty, then accessing cosmic energies, then purifying your energy body, then activating your third eye. So these are the 5 things in the science of meditation. I am teaching you now the science of meditation. I request everybody to say whatever I say. श्वासानुसंधान, चित्त वृत्ति निरोध, विश्व शक्ति आवाहन, नाड़ी मंडल शुद्धि, दिव्य चक्षु का प्राप्ति. अपना अंतिम लक्ष्य है to have a third eye. जैसा संजय जी ने धृतराष्ट्र के वहां होते हुए पूरा भारत युद्ध के देखे, जैसे हम टीवी में देखते हैं. उन दिनों वो रनिंग कमेंट्री दे रहे थे, ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा. फिर धृतराष्ट्र ने पूछते हैं अब क्या हो रहा है बताइए हे संजय जी. अब यही हो रहा है कि अब उसका वधा हो रहा है. See, running commentary, that is the third eye. If Sanjay has a third eye, how about Pune people? How do you get to the third eye? For the third eye, your etheric body, प्राणमय कोश का शुद्धिकरण होनी चाहिए. न जाने कितने जन्मों से आप जो प्राणमय कोश पाए हैं वो अशुद्ध है. उसको एम्प्टी करें कप को, फिर चाय डाल सकते हैं या दही डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं, ना कुछ भी. Unless you empty your cup, nothing new can come in. So that emptying the mind, until you empty the mind, nothing new can come here. And what is a scientist? Exploring something new, not being stuck up in the old. So unless you empty your mind, how can you get something new in the mind? So that emptying the mind, the cup of the mind, meditation, that is chitta vritti nirodha. And that is possible only through shwasanusandhan, becoming one with your breath.